हाय डियर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो लोग जो सबकों से इंग्लिश नहीं सीख पा रहे या मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का सबक दे रहा हूँ। सिर्फ 3 इंग्लिश गाने जिनसे आपकी इंग्लिश बोलने के अंदाज में मुमकिन निखार आ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि सारा सबक सुने और मेरी आवाज़ को बर्दाश्त कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा जो पहला सॉन्ग है वो समबॉडीज़ मी से लिया गया है। उसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमें सबसे पहले इन अल्फाज पर तवज्जो देना होगी। So the first thing that I'm going to demonstrate to you is you. It's not you, it's your. And the next one is do you. It's not do you. आपको कहना है do you. I mean कि इसमें जो डी के बाद ओ आ रहा है वो ऑलमोस्ट ओमिशन में है, उसको मिटा दिया जाए, डी को यू से मिला दिया जाए तो बनता है do you. And the next word that is remember. It's quite easier. You should say remember. Okay? So remember me. जैसे ही आप remember ख़त्म करें, me को लंबा खींचे like remember me. Okay? So the next thing that is like I. It's not like I. It's like I. Okay? It is like I. Okay? Like I remember you. So let's practice. You. Do you remember me? Do you like? Now listen. You. Do you remember me? Now let's try secondly. You. Do you remember me? Now the second line. Like I remember you. Do you? Okay, same to same जैसे हमने कहा do you spend your life, do you spend your life. It's not tough, ये सॉन्ग काफ़ी easier था. You spend your life. इसमें spend का जो D है उसको skip करना है, हमें कहना है spend, और जैसे ही spend को ख़त्म किया जाए next word को लिंक कर लीजिएगा. You spend your life. The next thing is that going back in your mind to the time. इसमें that में क्या आएगा? that time. इसमें T almost skip है और linking किया गया time को. इसमें 2 T आ रहे हैं, अगर आप गौर करें तो that T पे ख़त्म हो रहा है और time जो है T से शुरू हो रहा है. सो हमें एक T बनाना है that time के बजाय that time. इसमें वक्फा भी ख़त्म हो जाएगा और एक T की आवाज़ भी आएगी, जैसे कि that time. इस तरह नहीं कहना that time, say that time. Okay? Now let's practice this song. You remember me like I remember you. You spent your life going back in your mind to the time. इसमें going back in your mind को तेज़ी से पढ़ना है. Going back into mind to the time. Perfect. Now let's practice again. You remember me like I remember you. You spend your life going back into mind to the time. 'Cause I walk the streets alone. Okay, now let's go to the next slide. इस पैराग्राफ में आपको cause, okay, it's not a cause, it is cause and cause के बाद फौरन I यानी लिंक कर दीजिए cause I, okay, आगे रुकना भी है cause I. And the next thing is that I walk that street. नहीं कहना I walk the streets. Okay, क्या होता है I walk the streets. इसमें T skip है, silent है. I walk the streets alone.
Okay, I hate की बजाय I hate आगे फौरन कह देना being. I hate being. Okay, I hate being on my own. Okay, I'm sorry about my voice, but I'm just giving you the tips how to sing a song. Okay, I hate being on my own, and everyone can see that I really fell. And I'm going through hell, thinking about you with somebody else. Okay? Here, thinking की बजाय thinking कहना है, जी को साइलेंट करना है, ए को भी साइलेंट, सो ये वर्ड बनेगा thinking बा, thinking बा, thinking बा. इसको ये नहीं कहना thinking about, कहना है thinking बा और फौरन you कह देना. सो कहना है thinking about you with somebody else. Okay? Now let's practice this paragraph also. 'Cause I walk the streets alone. I hate being on my own, and everyone can see that I really fell. And I'm going through hell, thinking about you with somebody else. Now let's have the last paragraph of this song, that is somebody. इसमें somebody नहीं कहना, बी की आवाज़ ना आए, बल्कि somebody कहें, somebody. ओके, जो भी बी रेड में है वो साइलेंट है, और जो ब्लू में है वो अगले से लिंक हो रहा है, और बिटवीन अगर कोई लेटर टी जिससे आ रहा है या डब्ल्यू टी है यानी रेड में है, उसको भी हमने साइलेंट करना है. सो लेट्स प्रैक्टिस नाउ. Somebody wants you. एक ये ट्यून, एक ये. Somebody wants you. Somebody needs you. Somebody dreams about you every single night. Somebody can't breathe. Without you is lonely. Without you is lonely. Somebody hopes that one day you will see that somebody's me, that somebody's me, yeah. Well, that was the perfect song that we have done in front of you. Now it's up to you, you need to practice. और हाँ, अगर तो आपको ये सॉन्ग लगा अच्छा और इसमें आप प्रैक्टिस करने के हुए काबिल, तो मुझे बताइएगा. जो रेस्ट ऑफ 2 सॉन्ग्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस का आपको टिप्स दिया करूँगा. सो ये हमारा सॉन्ग सिंगिंग के हवाले से इंग्लिश सीखने का मकसद था. हमें अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, इसमें मैंने म्यूज़िक का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ सिंगिंग की है, इसलिए ताकि कम से कम हमें इसका बुरा असर मिले. सो हम अब इंग्लिश सीखने का हमारा सबसे पहला मकसद होता है, हमारा मकसूद जो है वो इंग्लिश सीखना है. वो कैसे? उसमें एक्सेंट को निखार देना, और ये सबसे बड़ा 50% आप इंग्लिश का एक्सेंट सिर्फ सॉन्ग से सीख सकते हैं. सो मेरे साथ रहिएगा. अभी मैं सॉन्ग को आपके सामने सिंग करना चाहता हूँ, इसको सुनिएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Somebody wants you, somebody needs you, somebody dreams about you every single night, somebody can't breathe, that you is lonely, somebody hopes that one day you'll see that somebody's me, that somebody's me, yeah. Now remember, एक चीज़ जो मैं आपको नहीं बता पाया वो ये थी, यू विल सी के बजाय आप डब्ल्यू को स्किप करें तो वो आवाज़ बनती है यू विस. ओके, आप आई डबल एल को मत बोलिएगा, आप डब्ल्यू को सी से मिला दे तो वो बनता है विस सी. ओके, सो यू को साथ मिलाया तो बना यू विस सी, यू विस सी. लाइक somebody hopes that one day you will see. ओके, यहाँ पे वन डे के बजाय अंडे बोलिएगा. ओके, somebody hopes and then you will see that somebody's me. Do you remember me like I remember you? You spent your life going back in your mind to the time. 'Cause
'Cause I walk the streets alone. I hate being on my own, and everyone can see that I really fell. I'm going through hell, thinking about you with somebody else. Somebody wants you, somebody needs you, somebody dreams about you every single night. Somebody can't breathe, that you is lonely. Somebody hopes that one day you will see that somebody's me, that somebody's me, yeah. वेल आई होप सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपनी वॉइस और इस तरह का कुछ कहने का नहीं बोला. अगर तो आपको मेरी आवाज़ पसंद आई या नहीं, आई डोंट केयर, बट वन थिंग दैट आई हैव डन परफेक्टली वो थी आपको प्रोनाउंस करवाना वर्ड को, कि इसको इस तरह से अदा करना है. इसको ना सिर्फ सॉन्ग में बल्कि रेगुलर लाइफ में भी इस्तेमाल कीजिएगा कि वर्ड्स को लिंक बाय लिंक कैसे करना है और वर्ड्स में से किन अल्फाजों की डंडी मारनी है. जैसे टी को आपने छोड़ देना है. सम टाइम आप यू विल सी में आप कहते हैं यस सी, वन डे में अंडे, राइट. तो दैट्स द गुड थिंग दैट यू रियली वांट टू स्पीक अप, ओके. और मुझे बताइएगा कि अगर तो आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा, सॉन्ग की नहीं बात कर रहा, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा, इसका पार्ट 1 जो था, तो आप हमें बताइएगा. हम रेस्ट ऑफ सॉन्ग्स भी आप तक पहुँचाएंगे. तो मुझे दीजिए इजाज़त. दैट्स ऑल फॉर नाउ. Thanks for being with the A.